Hello everyone, good morning from our Switzerland chalet balcony. आज है हमारा डे 2 इन स्विट्ज़रलैंड और हम जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेरी टेल विलेज इन स्विट्ज़रलैंड. दिस इज़ आवर chalet breakfast room look like. हम लोग यहाँ पे वी टुक breakfast package with our stay and the proper Swiss type of a breakfast you can have. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े हमारे विलेज के पास विच इज़ अ लॉटरब्रुनन जो हार्डली 7 minutes फ्रॉम विल्डर्सविल. लुक एट दिस. सो द विल्डर्सविल जाने के लिए इट्स अ स्ट्रेट ट्रेन. आफ्टर द विल्डर्सविल देयर द ग्रिंडलवॉल, देन मूरेन, देन ओंगफ्रू. सो हमारा जो स्टे था वो एग्जैक्टली इन द बेस ऑफ ऑल द फेरी टेल विलेज एंड सो प्रॉपर बेस्ट डे आई कैन रिकमेंड यू गाइज टू स्टे इन द स्विट्ज़रलैंड. तो पूरा स्विट्ज़रलैंड एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने स्विस पास लिया था फॉर 8 days बिकॉज वी वर हियर फॉर 8 days. इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव बट ऑनेस्टली इट्स ओवरऑल वर्थ इट. यू कैन गेट एनी ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्री, इवन बोट राइड, बस, सम ऑफ द इवन एक्टिविटीज फ्री. सो आई थिंक सो इट्स टोटली वर्थ इट. अगर आपको एक सिंगल वे के लिए भी टिकट निकालना है इट विल गो फॉर 2500. But the Swiss pass for 8 days we paid almost, so per person it cost us around 35,000 rupees for 8 days and for both it goes around 70,000 for proper 8 days जहाँ से आप कुछ भी ट्रैवल कर सकते थे. बस प्लस विद द पास हम लोगों ने ओंगफ्रू टॉप ऑफ द यूरोप के भी टिकट खरीदे थे. सो विद द कंबाइन वी गॉट सम डिस्काउंट. So our overall cost at the Switzerland for travel goes around 97,000 approximately. So guys, this is the Lauterbrunnen, the cutest fairy tale village of the Switzerland. It's very famous. आप कुछ भी search कर लो. This beautiful village of Lauterbrunnen, just like a fairy tale. The famous waterfall. That's my husband preparing for my bags and jacket. and jacket. It's a looking nice coordination. Even with this is us. Roving around Lauterbrunnen. These are cute dresses. This is the very beautiful cemetery I saw in Switzerland. With every village there was this place open and people comes and pray to their loved one. Now we are heading to the Stubbuck waterfall. यहाँ पे आने के लिए you have to do little bit hiking from the mountain. It's hardly 10 minutes. So yeah, after 1 steps of the hiking you can view the full Switzerland, like full Lauterbrunnen village, very beautiful Lauterbrunnen village. Now we are going for a next step of hiking. So यहाँ so for the waterfall you have to go under the tunnel. This is a tunnel. Tunnel के बाद you have to again take some steps and then you can see the most amazing beautiful view of Lauterbrunnen under the waterfall. So yeah, this is, we are going for a little bit adventure. Guys, you just hardly need 1.5 or 2 hours to explore whole the village because village is very like it's a very small and hardly like there is a lot of scenic view to look for, like the Stubbuck waterfall. And आप चाहिए तो walk कर सकते हो, you can sit and take a coffee and just roam around the village through the rail yards. So you don't need a lot of time to explore this. So इसलिए हम लोग मॉर्निंग ही यहाँ पे आ गए थे. सो वी कैन सॉ लाइक बहुत कम रश मिले बिकॉज लोग बहुत आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ फेरी टेल विलेज. एंड आफ्टर दैट जैसे हमारा लॉटरब्रुनन हम लोग मॉर्निंग में थे लाइक अराउंड
10:30 we finished from here, and we left for the the most amazing place, which is a starred and Sanin, the famous Bollywood shooting location and most luxurious stays of Switzerland. This is how the mountain train looks like. They have a different color for a different type of a trains. This is a mountain train coming from the Ongfru, and going to the Grindelwald, Muren, Lauterbrunnen, and then Wilderswil. And yeah, so this is full about our fairy tale village small vlog. Please guys, stay tuned, because the next vlog is going to be proper Bollywood theme vlog for the Bollywood famous shooting location of a DDLJ and most of the shooting location. So yeah, thank you for watching, and don't forget comment, like and subscribe.